So join our hands and get ready for chanting of Omkar thrice. Sai Ram to one and all present over here. And as you know that we started our chapter combustion and flame before because many are still coming. I would like to give you a quick revision. As you all know that our syllabus first five chapters are coming and don't miss any class because this is the last week and after this because we will get one more class or I think this will be the last class maybe possible before examination. Crop production and management, you all know about the practices of crop production. There are so many types of questions and some about the Rabi crops, Kharif crops, basic practices of crop production, preparation of soil, sowing the seeds, manure and fertilizers, differences, irrigation, weeds, removal of weeds, harvesting, storage. And every practice of agriculture production has some questions, important questions, and we already discussed many times. And then irrigation also. Then second chapter is microorganisms, friends and foe. You all know that microorganisms play a very important role in our life, and because of microorganisms, we are far away from each other. We are studying in virtual classroom because of virus. You know, so we all are facing problem. Ki is very small in size. We can't see with our naked eyes, but it can play its role. And what is its role? All of you know that because it is disease causing microorganism, and that's why we are facing problems. But not all the microorganisms are disease causing microorganisms. Many are friendly microorganisms also. So there are five groups: bacteria, virus, protozoans, algae, fungi. About their habitat, vaccine, how does it work, and how friendly microorganisms play its role, like in the making of curd, vaccination, in increasing soil fertility, cleaning the environment, and number of disease-causing microorganisms, about the communicable disease, and prevention, how can we take prevention, some names of disease due to different type of microorganisms are given there, and about the preservation. All of you know about the food poisoning and preservation. Generally, during this time of COVID pandemic, it is advised by the doctors to don't take stale food. ठंडा खाना नहीं खाना चाहिए. Yes, it is advised by the experts, and not experts. Our ancestors, our elders always suggest us better to take fresh food because we are at home, we are at a distance. So at this time, we can take fresh food. You are not going to school, you are not coming to school. So you can take fresh food right now. And what is the meaning of food poisoning? Food that gives us energy can turn into the form of poison if we consume after a definite period of time. And Sairam sir. every eatable, every food item uh, which gives us energy, but sometimes it happens because of that food items we face number of problems. Because after a certain period of time, harmful microorganisms started growing on the food. And that's why how can we check?
Not all the time with the help of taste we can check it is spoiled or not. By the color change, smell, odor change, we can, and sometimes it happens that some bubbles started coming out. So that indicates yes, food is spoiled. And how can we prevent food? There are some methods of food preservation. All of you know, drying, keeping things in the sun. That also is helpful. आपकी मम्मी पापड़ बनाती है और उन पापड़ को धूप में सुखाने के लिए रख देती है और जब अच्छे से सूख जाते हैं तो 1 साल 2 साल तक काम आते रहते हैं. यस और नो? लेकिन ऐसा नहीं है. आपकी मम्मी रोटी बनाएगी 1 सितंबर को, लास्ट डेट ऑफ सितंबर 30 सितंबर तक हम उन्हीं चपाती को नहीं खा सकते. कि 1 तारीख को हमने 10 लीटर दूध खरीद लिया. नाउ 10 लीटर ऑफ मिल्क इज सफिशिएंट फॉर होल मंथ. लास्ट वीक तक डेट तक हम इस दूध को, इसी दूध की चाय बना के पियेंगे. एक बार लेके आ गए, नाउ इज फ्री. नॉट लाइक दिस. सो इस पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए हमको कि किन चीजों को, कि आप रोज आप वही दूध लेके आए रोज उसको धूप पर रखें. बिकॉज सर टोल्ड कि आफ्टर कीपिंग द फूड इन द सन इट कैन बी यूज फॉर मेनी डेज. तो वो हर एक चीज के लिए नहीं है ना. ये बात ध्यान रखना चाहिए. आपकी मदर अचार बनाती है, पिकल्स बनाती है, एंड शी एडेड ऑयल, लॉट्स ऑफ ऑयल एंड सॉल्ट आल्सो. And sometime in different sweets is the vinegar also one of the natural preservatives. So by heating, by boiling, by putting a pasteurization. Now is clear about the pasteurization better, Ankush? हाँ, Yes, एक्चुअली sir. जो फूड जो हम मिल्क लेते हैं, पैकेट मिल्क, दैट इज एक्चुअली ए पॉस्चराइज्ड मिल्क, है ना. अ फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर has given an excellent idea of preserving this food, and this is called pasteurization after his name, and it is used for keeping milk preserved for 2 or 3 days, है ना. तो milk is preserved by the method of pasteurization. So what happens? First the milk is heated up to 70 to 80 degrees Celsius for 15 to 30 seconds, and most of the bacteria germs present in it killed, and then cooled down, सर then packed in the packet. Yes, beta. सर वो जो सर हम सर पापड़ जो बनते हैं सर, कभी कभी सर उनमें पहले से ही फंगस लग जाती है. इसको ऐसा ऐसा पहले से ही क्यों होता है सर? पहले से ही फंगस नहीं लगती. जब हम पापड़ को पूरी तरीके से सूखे नहीं, ड्राई नहीं हो, और उसको हम कंटेनर में रख देंगे तो उसमें फंगस लग जाएगी. आदमी में भी फंगस लग जाती है, फंगस इन्फेक्शन हो जाता है. अगर हम जब आफ्टर टेकिंग बाथ हम अपनी बॉडी को प्रॉपरली क्लीन नहीं करेंगे तो हमारे बॉडी पार्ट्स में भी कहीं कहीं फंगस लग जाती है. कपड़ों में फंगस लग जाती है, शूज में फंगस लग जाती है. और ये जो रेनी सीजन इज द सुटेबल व्हेन मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द एयर. ओके, देन अबाउट द सर पेस्चराइजेशन प्रोसेस किन किन चीजों को प्रिजर्व करने के लिए होता है मिल्क के अलावा? ठीक है. अच्छा, और इसमें आप देखेंगे अगर आप लोगों के यहाँ पैकेट फूड आता है तो यू विल सी कि उसमें एक दिन आगे की डेट डली रहती है. जैसे यस सर. तो हमने जैसे Yes, sir. फर्स्ट को आज अगर हमने मिल्क का पैकेट देखे उसको, तो उसमें प्रिंट रहेगा 2 सितंबर. मतलब दैट फूड दैट मिल्क पैकेट इज सुटेबल अप टू 2 सितंबर. हाँ, ऐसा नहीं, वो दुकान वाले 2 सितंबर को भी कई बार उसको सेल कर देते हैं कि ये तो आज का ही है ना. तो ये नहीं है, उसमें एक दिन एक्स्ट्रा डेट डली रहती है. मतलब ये है कि अप टू दैट डेट वी कैन यूज इट. अब कुछ लोग बोलते हैं वी आर ऑल ऑफ अस वी आर फॉलोइंग दिस मेथड ऑफ कीपिंग द फूड फ्रेश, रेफ्रिजरेशन. अगर कई लोग तो रेफ्रिजरेटर के फेवर में बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि शायद आप लोगों का क्या सोचना है आप बताइएगा कि जब से रेफ्रिजरेटर आया तब से हम लोग बासी खाना खाना सीख गए. यस और नो? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. क्योंकि अगर हमारे यहाँ सुबह मम्मी ने वेजिटेबल्स बनाई है और वो बच गई है तो हम उसको खत्म नहीं करते, उसको फेंकते नहीं है, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं कि वो खराब नहीं होगा.
और फिर उसको शाम को गर्म करके खा लेते हैं। ये सभी क्या कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन खाने का बाहर बाहर डिकम्पोजिशन होना अच्छा है, बाहर सड़ जाए अच्छा है, अंदर पेट में जाके नहीं सड़ना चाहिए। कई बार चीजें खत्म नहीं होती तो भी हम खा लेते हैं कि अरे कौन फेंकेगा इसको, खाने की चीजें है, अन्न ब्रह्म है, इसको खा लो। तो कितना खाओगे? अच्छा एक चीज बताइए कि अगर हमने आज पैकेट खरीदा और रेफ्रिजरेटर में रख दिया तो पूरे महीने उस पैकेट को यूज कर सकते हैं क्या धाकड़ जी? नहीं कर सकते। वाई? अंकुश, if we keep a milk packet in the refrigerator, can we use up to month? No, sir. Why? सर क्योंकि फ्रिज में से बहुत सारी हार्मफुल गैसेस रहती हैं। फिर फ्रिज यूज क्यों करते हो? सर थोड़े टाइम के लिए। नहीं, थोड़े टाइम के लिए थोड़ी फ्रिज यूज करते हो। फ्रिज का तो स्विच ऑफ होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का ऑफ होता ही नहीं है। वो जब लाइट कट होती है तभी ऑफ होता है, नहीं तो हमेशा चलता है। सर लेकिन वो वर्क तो 8 आवर्स ही करता है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या रेफ्रिजरेटर किसी भी फूड को लंबे समय तक प्रिजर्व करके रख सकता है? आंसर इज नो। तो व्हाट इज इट्स यूज? रेफ्रिजरेटर स्लो डाउन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्लो कर देता है, बट डोंट इट डजंट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हेन फूड केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर। Isn't it? तो ये बात ध्यान रखिएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल, बहुत बड़ा डायग्राम, सारे डायग्राम कर लीजिए। Then synthetic fibers and plastics, all of you know about the plastic, thermosetting, thermoplastic, metalline, melamine, सब पढ़ लीजिए। नायलॉन, एक्रिलिक्स, प्लास्टिक इज अ मैटर ऑफ चॉइस। सभी लोग प्लास्टिक यूज करते हैं। ये भी प्लास्टिक का बना हुआ है। माउस आपको दिख रहा है, अगर मैं दिखाऊं, ये माउस भी प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें भी प्लास्टिक यूज है। लेकिन मेरे पास ये बोतल है, इज नॉट इजी टू यूज, काफी हैवी हो जाता ना। दैट्स व्हाई वी यूज प्लास्टिक, बिकॉज इजी टू हैंडल। अच्छा, इजी, long lasting, very good. And the water kept in this steel bottle is good or kept in plastic bottle is good? स्टील बॉटल। हाँ, तो जब भी स्कूल आएंगे ये ऐसी बोतल लेके आना, ठीक है? लेकिन हम तो क्या करते हैं, वो जो बिस्लरी का 20 रुपीज का जो वाटर बोतल भी परचेज है, उसका खत्म कर दिया, उसको बहुत संभाल के रखते हैं हम लोग। और बर्थडे पे जब हम 1 लीटर वाली जो लेके आते हैं कोल्ड ड्रिंक्स, उसको तो हम सालों तक संभाल के रखते हैं, वो बहुत काम की चीज होती है। वो दूध वाले अंकल भी सालों उसी में दूध ले लेके आ जाते हैं। तो ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स आर नॉट गुड। So when you purchase plastic, always try to purchase a good quality of plastic, not the bad quality of plastic. Be careful. जैसा टूथब्रश होता है, आप सभी टूथ ब्रशिंग करते हैं, एवरीडे ब्रश करते हैं, आई होप करते होंगे। यस सर। यस सर। यस सर। सर करते हैं। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। मैं भी करता हूँ। कुछ लोग सुबह सुबह उठ के करते हैं, कुछ लोग 11 बजे उठ के करते हैं। 11 बजे कौन कौन उठता है सुबह? रेज है। हाँ, कुछ तो है जो बहुत लेट उठते हैं। मुझे आई हैव दिस इंफॉर्मेशन, मुझे पता चल गया कौन कौन बहुत लेट उठता है। अखिल बहुत लेट उठता है, अभी तो खाना खा रहा था कि हम कहाँ गायब हो गया अखिल? तो मैं लेट नहीं उठता सर, 8 बजे उठता हूँ रोज। 8 बजे उठता है, तो व्हाई यू आर सो लेट इन टेकिंग योर लंच? इज अबाउट 3 o'clock। सर एक्चुअली सर क्या हुआ सर, सर ऐसे क्लास अभी 1:30 पर शुरू होती है ना, तो मम्मी बोल रही थी कि क्लास के बाद जो ब्रेक मिलता है उसमें खा लेना। उसमें
Okay. Take care next time. So और दिस तो ब्रश हम सभी करते हैं, लेकिन ब्रश का हैंडल अलग टाइप का होता है, उसके ब्रिस्टल्स अलग होते हैं. कॉमिंग sir. करते हैं, उसका अलग होता है. हाँ, तो वो टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग. So many properties. Metals and non-metals, very interesting, है ना? Displacement, reaction, activity series, and rusting on copper vessel. So many interesting. Acidic nature, acidic oxide, basic oxides, physical properties, chemical properties, and uses of metals, uses of non-metals. Then coal and petroleum we already finished few days back. Now it's time again combustion and flame. And I am saying, can I see Kritika Chauhan? Kritika Chauhan, can you open your camera? Ved Sivare, oh, Kritika is here. Very good. Kritika, Sairam Beta Kritika, I am really thankful to you. And can I see Vedanti Gurjar? Keep your camera on, Kritika. Oh, as I said, keep your camera on, she disappeared. What is this? Vedanti, are you there, beta? Okay, Vedanti. How are you, Vedanti? Vedanti, how are you? Sir, Vedanti? fine. Vedanti. Very good. Thank you very much for joining us with open camera for 2 seconds. No problem. And because in examination time you have to keep your camera open, otherwise we will make a note. Yes, camera one fire. So it's very important. Now combustion and flame. Okay. I want to see Samriddhi Sahu. Is Samriddhi Sahu is here? Samriddhi Sahu. She joined the class and she again disappeared from the yes. Pranav Pradhan, plastic bottle is using by him. At home we can use steel utensil. No? My voice is not clear, but Mayank, maybe network issue in your area. That's why you are not able to get my voice. Now I am showing you what we discussed yesterday. Yes. You are able to see the screen? Pranav? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When I enlarge its size, it is taking time to open. So combustion is the chemical process in which a combustible material react with oxygen and produce heat and light. And we discussed yesterday that flame and combustion. Of burning of fuel What we learned in the previous lesson, previous to class. produce heat or light is called combustion. We use a variety of fuels like kerosene, wood, coal, LPG in our daily lives. Each of these fuels has a different ignition temperature. Low ignition temperature means
that they heat very quickly like LPG. Lower ignition temperature means they quickly catch fire. They take less time to heat, just like LPG. How quickly LPG catches fire, all of you know about it. And when we compare with the wood takes time to catch fire, it takes longer time to heat. High ignition temperature means they take more heat or help of other fuels to heat like wood. Here we use dry leaves to help the wood burn faster. The combustion process of fuels can cause them to let out smoke, light, smell, and sound as residue. Some of these can be bad for our health. To save ourselves from the harmful gases, we can make outfits for the gases to be released. In this scenario, we made a chimney to save ourselves from the smoke. Friends, as you rightly observed, we are at our grandparents' place. Do you remember that we made our own oven last time? You do. That's great. Now let's see what happens next. What shall we do about light now? What are we doing? Oh yes, it is 7 o'clock and it's dark outside already. We need to light a lamp. But how? Look at this hurricane lamp. What is this which is on the screen? Do you know about it? A lamp. सर Lalten. सर लालटेन है केरोसिन लैम्प अच्छा यस बेटा सर केरोसिन लैम्प yes the kerosene we filled in it. Kerosene we filled. Kerosene is a fuel. So but nowadays we are not using lantern to light the area. We are using different sources just like battery based electric lamp. It needs kerosene and a good wick to light. We don't have any of those things. Anybody has this kind? किसी के पास अभी भी लालटेन है घर में? सर मेरे घर में है, मेरे घर में तो No, sir. हाँ बहुत कम मिलेंगी और पुरानी लालटेन है यूज नहीं होता है लेकिन हमारे पास पहले की होगी. That's true. What can we do now? Mummy, do we have candles with us? Yes, I have packed 2 candles in the bag. You can use them. This is great. Though I have a question, it is windy here. Won't the strong wind keep putting out the candle's flame? Isn't it interesting to know that the same air which helps the fire burn steadily can also put fire out when it blows strong and fast? Let us use the glass cover of the... Why they cover the candle with glass? Can anybody tell me? तो जिससे ऑक्सीजन पास ना हो सर. नहीं ऑक्सीजन तो तब भी आएगी. सर जिससे सर वो लाइट ज्यादा फैलेगा तो सर रिफ्लेक्शन हो. वेरी गुड. ये दोनों का काम होता है. ऐसे we can stop blowing off candle flame. We can control the air from the surrounding towards the candle. Yes, so it is important. That's why we keep it. The hurricane lamp to protect the flame from the wind. Protected flame from the wind. Right. That way the candle will last longer than it would have otherwise. We have successfully made our candle lamp. The candle will keep lighting us throughout the night. I still have some questions. More questions?
Yes. Like, why does the flame of the hurricane lamp last longer than that of an average candle? The amount of kerosene used in the lamp is not a lot. Yes, very good question. Can anybody give me answer? Not a single child is with open camera. I would like to see the face. So what is the question? Rishika, So what is the I question? am repeating this question again. Carefully listen to it. More questions? Yes. Like, why does the flame of the hurricane lamp last longer than that of an average candle? The amount of Listen. Again listen. Sir, I got it, sir. Like, why does the flame of the hurricane lamp last longer Last than that longer. of an average candle? The amount of kerosene used in the lamp is not a lot. Sir, may I? आपने घर में देखा होगा कि एक बार हम दिए में ऑयल या घी डालते हैं तो वो काफी देर तक चलता है। वाई? उसमें ऐसा क्या है कि वो बहुत देर तक वो जलती रहती है लैम्प? यस, सर क्योंकि सर कैंडल में सर Yes, वैक्स yes. होता है सर, तो वो जल्दी पिघल जाता है, तो थोड़ा उसका वो थोड़ा कम देर तक जलती है। ओके, एनी प्रणव? और सर वो लैंप का सर वो ग्लास के अंदर होता है, तो सर उसमें रिफ्लेक्शन होता है, जिससे सर वो ज्यादा देर तक जलता है। अच्छा, दिए पे क्या होता है? दिए में कहाँ से रिफ्लेक्शन होता है? सर उसमें तो घी होता है। Anybody? सर इट हैज अ हाँ, घी फ्यूल। होता है ना बेटा, देर तक। यस, in the candle lamp there is a wax is the fuel which burns. Oil, maybe kerosene, maybe mustard oil, or maybe ghee, and which we use that is made up of cotton. And do you know, when we keep one end of the cotton in lamp oil, it due to capillary action slowly that oil reaches top of the wick and that burn. It is also a controlled burning. Not all the oil reaches up to the lamp wick top. Slowly it reaches and burn. It is quite interesting. Good observation, Sanya. Children, for this you need to know about the idle fuel and fuel efficiency. Very important word. These two words are very important. Idle fuel and fuel efficiency. I will give you more we'll discuss more about efficiency. What does it mean? Can anybody tell me about the fuel efficiency? What does it mean? What comes in your mind? Try to speak. Niyati. What is fuel efficiency? So may I? Yes, better. वो मतलब कि वो फ्यूल कितना इफेक्टिव होगा। Okay. Sarvan? सर may I? सर फ्यूल एफिशिएंसी ये हो सकता है सर कि फ्यूल की कितना एफिशिएंट है लाइटनिंग और हीट देने के लिए। Okay, okay. Ankush, you are also thinking. Yes, सर better. may I? समय सर फ्यूल एफिशिएंसी मतलब सर वो कितना उसमें रेशियो में सर फ्यूल है, तो सर Okay. Yes, Akhil. सर वो प्रोसेस करने के लिए कितना रेशियो में फ्यूल है सर, कितने रेशियो। सर फ्यूल एफिशिएंसी Okay, सर, okay. तब फ्यूल एफिशिएंसी हो सकता है सर कि उसमें सर फ्यूल की कितनी कैपेसिटी है सर, कितना सर वो कितना परफॉर्म कर सकते हैं सर, कितना मतलब सर वो मैं कितना देर तक जल Okay. सकता है।
Yeah, so Sir, the amount of heat energy produced by burning 1 kg of fuel. okay, you are giving me the technical definition, and I am not interested in that much difficult definition. Ankush is writing how long it can burn or how long it can provide heat and light. And Pranav is asking what are Posner molecules, but I am interested ozone particles. Okay. I will come to this point. These are not in our syllabus. Let me discuss about the efficiency of fuel. Read 72 notes and see the tables 6.6 and 6.7. What does it tell us? Now you will know that the amount of energy used on complete of 1 kg of fuel is called its calorific value. This is a definition which is useful for all of you, not only in class but in future classes also. Amount of heat energy produced by 1 kg of fuel, that is called its calorific value. And how can we explain, how can we understand? Are you getting my voice, Sarvak? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Because all the cameras are off, that's why. Why you are keeping your cameras off? I am talking to computer. I would like to talk to you all. कुछ खाना पीना हो तो यू आर फ्री टू ईट. हेडेक हो रहा है तो बात अलग है. क्या ऋषि का अखिल ने खाना पीना हो गया. नाउ विल स्टार्ट स्लीपिंग. क्या अखिल नींद आने लगा तो नहीं सर. वेरी गुड. आनी भी नहीं चाहिए. तो कैमरा ऑन रहेगा तो मुझे अच्छा लगता है. अमाउंट ऑफ हीट एंड अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय 1 kg ऑफ फ्यूल. अब ये मेरे पास एक 1 kg वुड पीसेस है. ओके अनिकेत. Yes, और sir. ये मेरे पास 1 kg पेट्रोल. इसको 1 kg जलाऊंगा, इसको भी 1 kg जलाऊंगा. किसमें ज्यादा हीट होगी? पेट्रोल और वुड? पेट्रोल. Sir, petrol. Petrol. पेट्रोल. It means its calorific value is more than wood pieces. Yes, sir. And Yes, sir. this is the way by which we can compare calorific value. Amount of heat produced on complete burning of 1 kg of fuel, that is called its calorific value. And its SI unit is kilojoule per kg. I will come to this point. We'll do some numerical questions also. Okay, see more thing. Yes, amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. Do you remember how we use so many twigs and leaves to flame the whereas when we cook on the gas at our home, the amount of energy used is less. That means LPG's calorific value is much more. This is chart of calorific value. You can see in the first table fuel is different types of fuel, and in second table calorific value, and in the bracket it is written kJ per kg. This is kilojoule per kg is the unit of calorific value. So LPG it has 55,000 kilojoule per kg calorific value. Hydrogen is 1,50,000 kilojoule per kg. Wood is 17,000 to 22,000 kilojoule per kg. Petrol is 45,000 and cow dung is 6,000 to 8,000.
than that of the twigs and leaves. Hydrogen is a costly fuel. Hydrogen fuel, biogas fuel, LPG fuel, And CNG. CNG fuel. Now I understand. I have one last question. Did you notice that the candle flame was mostly yellow and red while the flame reduced to the LPG is mostly blue? Yeah, this is very interesting. And it is most of the time it is blue in color, but candle is yellow in color. But have you seen sometime LPG gas also so yellowish color? In Yes, our sir. hill complex, we are Yes, getting sir. we are Yes, getting Yes, pipe sir. pressure gas, pipe gas through the pipes, and sometimes we found that it is very yellow in color. And when we kept any utensil, steel utensil on the flame, the bottom of the utensil become dark. But when the flame color is blue, food cooked faster and there is no black deposition on the lower bottom, outer bottom of the utensil. It means yellow color is more unburnt particles. More unburnt particles are there in yellow flame. And the temperature of yellow flame is lower than the temperature of blue flame. It means blue flame gives us more temperature, more heat in comparison to yellow flame. Why is that? Friends, can you tell Sanya about the many varieties of colors that a flame can have? Yes, now structure of the flame. Yes, you are right. Yellow, orange, red, blue, and many others. So these are the common colors of the flame, and we are very much familiar with these colors. There is a slight difference between first and second, but we are very much familiar with the yellow and blue. Yes, the color of the fuel depends on the kind of fuel being combusted. If the fuel is clean, it will emit less carbon and give a blue color. So this is very, if fuel is clean, on burning it will give less unburnt or carbon particles. If fuel is not clean, then it will give more carbon particles on burning, unburnt carbon particles. And very simple experiment, if you have a flame of candle and you keep a steel thing over it, so you see it becomes black in color. पहले हम लोगों के घर में घी के दिए से, घी के दीपक से काजल बनाया जाता था। उस घी के दीपक के ऊपर कोई बर्तन रख दिया जाता था और उसकी फ्लेम से वो टच होता था तो वो लगातार उस पर टच होने से कार्बन डिपॉजिट हो जाता था, वो काजल लगाया जाता था। आजकल वो काजल का हम लोग यूज नहीं करते हैं। डॉक्टर्स ने बोला है कि ये आंखों के लिए अच्छा नहीं होता, तो हम बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का कुछ ऐसा खरीद के लाते हैं जैसे पेन जैसी पेंसिल हो, वो उसको लगाते रहते हैं। उसमें पता नहीं कितने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। Yes, sir? Yes or no? Girls can tell me better than boys. Yes? So, वो काजल लगाने का हमारा एक ट्रेडिशनल तरीका था। Flame. I heard you got all your answers. You
from a fuel source can keep burning only when there is a steady source of air. It means without continuous steady supply of source of air, flame from a fuel cannot keep burning. We need a continuous support of air. Each fuel emits different amounts of carbon dioxide during the combustion process. If a fuel gives out blue flame, then it means it emits very less amount of carbon dioxide than a fuel that gives out orange or red flame. Blue color, it means cleaner fuel is burning. Incomplete combustion of fuels can cause them to produce carbon monoxide, causing suffocation and asphyxiation. We should be careful while burning or using fuels. Is it clear all about the types of fuels? Okay, we'll discuss more in coming period. So now Santi part, time is over. Om Shanti Shanti Shanti. Bye, children. Sairam, Thank you, sir. Thank you, sir.